ચાણસ્મા નગરપાલિકાની પ્લાસ્ટિક વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી 55 કિલો પ્લાસ્ટિક જપ્ત ₹15,700નો દંડ ફટકારાયો। માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના સ્વચ્છ ભારત વિકસિત ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા તેમજ સ્વચ્છ ભારત મિશન અર્બન ગુજરાત અંતર્ગત ચાલી રહેલી સ્વચ્છ ગુજરાત પ્લાસ્ટિક ફ્રી ગુજરાત ઝુંબેશને સફળ બનાવવા ચાણસ્મા નગરપાલિકા દ્વારા પ્લાસ્ટિક વિરુદ્ધ સઘન કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। चीफ ऑफिसर श्री प्रेरकभाई डी पटेल, प्रमुख श्री प्रतीक्षाबेन पटेल, उपप्रमुख श्री आंसुभाई एस पटेल तथा कारोबारी चेरमेन श्री शिल्पाबेन डी ठाकोरना मार्गदर्शन और सूचना अनुसार नगरपालिका सेनिटेशन शाखा द्वारा शहरना विविध विस्तारों में प्लास्टिक जप्ती अभियान चलाववामां आव्युं हतुं। आ अभियान दरमियान नगरपालिका विस्तारमां आवेल दुकानदारो तेमज लारी गल्ला धारकोनी तपास करवामां आवी हती, जेमां प्रतिबंधित प्लास्टिकनो उपयोग करता 26 जेटला दुकानदारोने लारी गल्ला धारको पासेथी अंदाजे 55 किलो प्लास्टिक जप्त करवामां आव्युं हतुं। उपरांत नियमोनो भंग करनाराओ सामे दंडनीय कार्यवाही करी कुल ₹15,700नो दंड वसूल करवामां आव्यो हतो। नगरपालिका तंत्र द्वारा वेपारीओ तेमज नागरिकोने सिंगल यूज प्लास्टिकनो उपयोग न करवा, पर्यावरणने अनुकूल विकल्पो अपनावा अने शहेरने स्वच्छ तथा प्लास्टिक मुक्त बनाववा सहकार आपवा अपील करवामां आवी छे। चाणस्मा नगरपालिकानी आ कार्यवाहीथी प्लास्टिकनो उपयोग करता वेपारीओमां जागृति साथे सावचेतीनो माहोल जोवा मळ्यो हतो।